students, in our previous video of inequalities, we have seen something about inequalities related sums. Lot of sums we have seen in there. So again in this video, first I will revise some basic concepts about inequalities again. Then we will start and we will go for some sums again from your NCERT book. Okay? तो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा कि इनइक्वालिटीज जो कि हमारा चैप्टर नंबर 6 है इन दिस बुक. तो इनइक्वालिटीज क्या होती है? इन वेरी प्रैक्टिकल लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि जिन रिलेशंस में, जिन इक्वेशंस में इक्वल की जगह पर ये लेस देन, ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू यूज होते हैं, these are called inequations or inequalities. Okay, so if definition we want to see, so we can go that two real numbers or two algebraic expressions, two real numbers or two algebraic expressions related by sign these, like these signs. You better know that greater than, less than, greater than equal to, less than equal to is called an inequality or an inequation. तो अगेन जिन इक्वेशंस में या जिन रिलेशंस में आप इन साइंस को देखते हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? इनइक्वेशंस. इनके बारे में हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में कुछ सम भी किए जो कि आपकी एक्सरसाइज 6.1 में से है. और इन इक्वेशन या इनइक्वालिटीज देयर आर टू टाइप्स. टाइप 1 जो कि होती है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी. स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में वो रिलेशन आते हैं जहां पर ग्रेटर देन और लेस देन वाले सिंबल्स यूज होते हैं या ये जो साइंस यूज होते हैं. लाइक यू कैन सी सम एग्जांपल्स. आई हैव रिटन ax plus b less than 0 and similarly ax plus by less than c. तो लेस देन और ग्रेटर देन वाले जो साइन है उन इनइक्वेशंस को या उन इनइक्वालिटीज को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी. और one more thing I want to say that here only one variable is there. तो ये है inequation in one variable. और यहाँ पर आप दो वेरिएबल देख सकते हैं. तो ये है inequations in two variables. Similarly, type 2 होती है slack inequalities. slack inequalities में वो रिलेशन आते हैं जहाँ पर greater than equal to और less than equal to यूज होते हैं. Like these examples. ax plus b less than equal to 0. Here you can see that less than equal to 0 and in this example greater than equal to 0 is used. So these are called slack inequalities. So again जहां पर less than या greater than यूज होते हैं these are called strict inequalities. और जहां पर greater than equal to या less than equal to यूज होते हैं these are called slack inequalities. One more thing I will write here that in those inequation only simple numbers are used. These are called numerical inequations or numerical inequalities. Or suppose some algebraic expressions are used, then it is called algebraic inequalities. Okay, algebraic. Yes, so this is your 21st sum from 6.1 again, and these are word problems. Now applications of linear inequalities. Now we will see about applications of inequations or inequalities. So this is your 21st sum that Ravi obtained 70 and 75 marks in first two unit test. पहले दो टेस्ट में रवि एक स्टूडेंट है, उसके आए 70 and 75 marks. Then he is asking that find minimum marks he should get in third test to have an average of at least 60 marks. इस वर्ड पर हमें ध्यान देना है कि थर्ड टेस्ट में उसके कितने मार्क्स आए, कि उन तीनों टेस्ट का जो एवरेज है that should be at least 60 marks. This word will matter, at least 60 marks. तो अगेन वन मोर टाइम, दो टेस्ट में रवि के मार्क्स आए 70 और 75 और हमें थर्ड टेस्ट में कितने मार्क्स उसके आए कि उन मार्क्स का एवरेज क्या हो जाए? एटलीस्ट 60 मार्क्स. तो सॉल्यूशन, लेट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रवि इन थर्ड टेस्ट बी x. माना हमने थर्ड टेस्ट में जो मार्क्स है दैट इज x.
these test marks, will be 70 plus 75 plus x upon 3. एवरेज हम सब जानते हैं, तीनों टेस्ट का एडिशन करेंगे और 3 से उन्हें डिवाइड कर देंगे. 70 and 75 that is 145 plus x upon 3. This is average of marks in all 3 tests. Yes. Now what is given to us? According to the question, that average should be, this average should be at least 60 marks. At least का मतलब क्या होता है? At least का मतलब है कि कम से कम 60 तो होना ही चाहिए, और कम से कम 60 होना चाहिए. इससे ज्यादा भी हो तो वैलिड है. तो कम से कम 60 इट मींस ये 60 के होना चाहिए, और इससे ज्यादा भी हो सकता है. ज्यादा मींस ग्रेटर देन, और कम से कम 60 दैट इज इक्वल टू. तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, आप याद रखें, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 मार्क्स. Now it has become a simple inequation like our previous sum. Simply we can solve it. 3 will be multiplied by 60, that will give 180, and plus 145 will become minus, that will give 35. So this is your final answer. Ravi should get 35 marks to fulfill this condition. यदि 35 मार्क्स आएंगे तो एटलीस्ट 60 मार्क का उसका एवरेज हो जाएगा. क्लियर? यस. अगेन दिस इज योर 23rd सम. व्हाट इज सेड दैट फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स. हमें ऐसे पेयर पता करने हैं जो ओड है और कॉन्जिक्यूटिव है. बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों 10 से छोटे होने चाहिए. And such that sum is more than 11, उन दोनों का सम 11 से ज्यादा होना चाहिए. तो सबसे पहली बात है, हमें एक ऐसा पेयर कंसीडर करना है जो कॉन्जिक्यूटिव हो और ओड हो. तो इन आवर अर्लियर क्लासेस वी हैव सीन इन वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस दैट लेट numbers are, suppose first number is x, so second number will be x plus 2. These are odd numbers if we are assuming them in algebra. Now what is given to us, that both of which are smaller than 10, x is less than 10 and x plus 2 is also less than 10. and यदि हम इसे solve करेंगे तो plus 2 will become minus 2, so x will be less than 8. And another condition is given to us that their sum is more than 11. So again I will write their sum. इन दोनों का सम करेंगे हम, x and x plus 2 का सम more than 11, should be more than 11. Now x and x, 2x, this plus 2 will become minus, that will become 9, and 2 will go down, that is 9 by 2. So these two conditions we can have after using these conditions. X less than 8 and x should be greater than 9 and half. So we can write x should be greater than 9 and half and less than 8. तो कंडीशन जो हमारे नंबर्स की है वो क्या है कि x 9 by 2 that is 4.5 से तो बड़ा होना चाहिए और 8 से छोटा होना चाहिए. और इसके साथ एक कंडीशन है कि वो क्या होने चाहिए, ओड. सो x में बी 4.5 से बड़ा ऐसा नंबर जो 8 से छोटा हो और ओड हो. पहला नंबर होगा 5 और दूसरा नंबर होगा 7. So these are two numbers 5 and 7 which belongs to this interval. Yes. So your pair. So यहाँ लिखते हैं हम, so required pairs. यदि हम पहला नंबर 5 लेते हैं तो दूसरा नंबर होगा 5 plus 2 that is 7, and suppose first number is 7, then second number will be 7 plus 2 that is 9. Clear? Yes. This is your 25th sum again, that the longest side of any triangle is 3 times the shortest side. एक ट्राइंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड है, शॉर्टेस्ट साइड्स का जो
shortest side है उसका क्या है 3 times, and we are given that third side is 2 centimeter shorter than the longest side. जो third side है वो longest side से 2 centimeter क्या है shorter है. और we are given that perimeter of triangle is at least. Again in our 21st sum we have seen what at least means, that is greater than equal to. So perimeter of triangle is at least 61 centimeter, and we have to find the minimum length of shortest side. So we will start the solution. We have to find minimum length of shortest side. So write let shortest side be x centimeter, and in our first line we are given that longest side is 3 times the shortest side. So we can write that longest side is 3 times, means 3 into x. And in our second line what is given to us, that third side, and we will write third side, what is given to us, that is 2 centimeter shorter than longest side. What is our longest side? 3x, and our third side is 2 centimeter shorter than longest side, so we can write it 3x minus 2 centimeter. Clear? Now we have decided all 3 sides here. Now we are coming on the perimeter, and what perimeter is? That sum of all the sides. So we are given that perimeter is at least 61 centimeter. So we can write according to the question that perimeter is at least 61. Again at least means कम से कम 61 हो, और इससे ज्यादा भी हो तो चलेगा. तो we can write it perimeter is कम से कम 61 के इक्वल हो और ज्यादा भी चलेगा. तो at least means greater than equal to 61 centimeter. Now perimeter means sum of all sides, so we can write x plus 3x plus 3x minus 2, and this greater than equal to is going on. Now x, 3x and 3x, that will become 7x, and this minus 2 will become plus, and what will be there? 7x greater than equal to 63. This 7 will go down, so we can write here x is greater than equal to 9. So this is your final answer, that length of shortest side will be greater than equal to 9. Clear?